Hi everyone, let's start solving today's lead code question 109. Convert sorted list to binary search tree. So before starting the video, what I want to tell, the main motive of this video is to solve this question, to approach this question in a very simple manner. बिल्कुल बिल्कुल simple रखेंगे video, okay? So what is the main motive? कि जैसे जैसे मैंने अप्रोच किया क्वेश्चन को, I am able to solve this question. The way I approach this, I want to deliver that part only in a very simple and innovative manner. Okay. So let's try to understand the question. Given the head of a singly linked list where elements are sorted in ascending order, okay, converted to a height balanced binary search tree. Okay, let me write my observations. Observations are very important for every question. Okay, so linked list दी हुई है, लिंक लिस्ट से कन्वर्ट करना है बाइनरी सर्च ट्री में. ओके, बीएसटी में कन्वर्ट करना है. लिंक लिस्ट किस टाइप की दी हुई है? सिंपली लिंक लिस्ट है, मैं रिवर्स में नहीं आ सकता हूँ. ओके, एंड सॉर्टेड है, sorted in manner of ascending order. These are my observation till now. Let me give you an explanation of what is a height balanced binary search tree. So what is a height balanced binary? So this definition is given by LeetCode only. A height balanced binary tree is a binary tree in which the depth of two subtrees of every node never differs by more than one. Okay. So if I take a tree 1, 2, I am simply taking a binary tree to explain you. 3, 4, 5. So for every node, I will try and check the depth of every two subtrees. If the difference of those depth are greater than one, so that is not a height balanced tree. Okay, so 2 के लिए देखता हूँ. यहाँ पे नल है, यहाँ पे भी नल है, तो हाइट कितनी निकल के आएगी? 0 0. डिफरेंस लेता हूँ, 0 माइनस 0 इज 0. ओके ओके, राइट में आते हैं. ओके, 3 का पहले हम आएंगे. ओके, यहाँ पे ये चेंज हो गया था. 4 है, 4 का चाइल्ड है 5. ओके, सो 5 पे आऊंगा मैं. 5 के नीचे भी है नल. नल हाइट कितनी आएगी? 5 के लेफ्ट की हाइट कितनी है? 0. राइट की हाइट कितनी है? 0. माइनस करूंगा 0, दैट इज वैलिड. ओके, 4 का राइट चाइल्ड की वैल्यू कितनी है? 1. और 4 के लेफ्ट की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे है नल, तो लेफ्ट का कितना आएगा? 0. और राइट से कितना आ रहा है? 1. हाइट आ रही है 1, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है, 1 आएगा. नो इश्यू, दिस इज ऑल्सो वैलिड. 3 पे चेक करता हूँ. 3 पे राइट में कुछ है ही नहीं, नल है, तो 3 के राइट की हाइट कितनी है? 0. लेफ्ट की हाइट कितनी है? 2. 2 minus 0, the absolute difference is 2, not valid. So this kind of tree is not valid where the height of left subtree and right subtree, the absolute difference of them is greater than or greater than 1. Okay, equal to 1 है, valid है. Less than 1 है, valid है. लेकिन अगर greater than 1 हो गया तो this is not valid. So we need to create a tree in this manner, like the resulted tree should be a height balanced tree. Okay. Okay, so let's see this example. Okay, so linked list को क्या करना है? खाली BST में कन्वर्ट नहीं करना है, एक हाइट बैलेंस्ड BST में कन्वर्ट करना है. ओके, ऑब्जर्वेशन 2. सो एग्जांपल देखते हैं. ये ऑब्जर्व व्हाट आई ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एग्जांपल कि लिंक लिस्ट दी हुई थी. ओके, इस लिंक लिस्ट की जो लेंथ थी वो ओड थी, ओड लेंथ लिंक लिस्ट है. एंड व्हाट आई ऑब्जर्व कि जो मिड आएगा that become my root of the tree node. Okay, जो BST बनाया है उसका जो रूट है वो मिड एलिमेंट है ऑफ लिंक लिस्ट का. तो ऑब्जर्वेशन क्या बनी कि मिड इज इक्वल टू रूट. सिंपली मिड को रूट बना दिया. लेफ्ट में लेफ्ट एलिमेंट्स है, राइट में राइट एलिमेंट्स है. ये कैसे अरेंज किया है वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में. लेकिन अभी हमें ये ऑब्जर्वेशन मिल गई है कि अगर ओड लेंथ है, जो भी हमारा मिड एलिमेंट आएगा, mid will become my root of the BST. Okay, so odd length के लिए बताया हुआ है, अब even length के लिए क्यों कौन डिस्कस करेगा? हम ही करेंगे. Okay, so what I approached कि I given an input to lead code only, and at the beginning I returned null from my code.
So LeetCode provided me an output for this even length. Okay, so this is the input I given to LeetCode. Okay, -1. Okay, these are the elements of my linked list, and for even length the mid will come, let me, 6 by 2 will become 3. Okay, so as per me, if I go to above observation for even length, the mid should be, the root of the BST should be 4. Okay, but when I tried with LeetCode, the LeetCode gave me an output of 6. Okay, so this thing we need to try ourselves. Okay, that as per question requirement, we need to make the root as a second mid element. So 3 plus 1th element. Okay, so 6 by 2 is 3, and I need the second mid. This is my first mid. Let me remove this, and this is my second mid. Okay, so 3 plus 1 is 4, 4 को बना दिया और 6 को बना दिया मैंने रूट, और बाकी सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया, वो बताऊंगा मैं कैसे अरेंज किया। ये आउटपुट आया था मेरे को लीड कोड से, मैंने खुद से नहीं बनाया। ओके ओके, सो now we need to discuss how we will find the, okay, before finding out the mid, first I want to tell as part of this question, if the question you are approaching is of type of trees, okay, try to approach the question in the manner of recursion to minimize the number of, or to minimize the lines of code you will return, and recursion will simply create a tree for you. So if the question you are solving is related to tree or something, try to solve that kind of question. Try to think in manner कि how I can write the code recursively. Okay, so इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। Tips, tip दे रहा हूँ एक। Okay, this is tips. Okay, so what I observed from this कि जो mid है उसको तो बना दिया रूट। चलो इसको थोड़ा नीचे अच्छे से लिखते हैं। मिड को बना दिया, मिड मेरा बन गया रूट। ओके, तो इस केस में मिड क्या आया, 6। अब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो छोटे एलिमेंट्स बीएसटी की प्रॉपर्टी होती है कि लेफ्ट में छोटे होते हैं, राइट में बड़े चाइल्ड्स होते हैं। ओके, ऐसा कभी नहीं होएगा बीएसटी में कि राइट सब ट्री विल कंटेन greater values, less value than root node, and the left subtree contain the greater value than root element. Left subtree will always contain smaller than root. Right subtrees will always contain greater than root. Okay, इक्वल टू लेना है तो एक जगह ले सकते हैं कि मैं लेफ्ट को अगर मैं मान के चलता हूँ कि लेफ्ट लेफ्ट में इक्वल टू वैल्यूज भी हो सकती है, तो एक ही जगह पे हम वो कंसिडर करके चल सकते हैं। आइदर चूज लेफ्ट, आइदर चूज राइट, एज पर यू, if you are comfortable. Okay, choose any part, either left either right. Okay, so root को मैंने बना दिया 6 क्योंकि वो मिड एलिमेंट था। अब लेफ्ट में क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं, आइदर -1, 2, 4, राइट में बचे दो एलिमेंट्स 8 एंड 10। ओके, सो ओड लेंथ के लिए मुझे अबव एग्जांपल से पता चल गया था कि जो भी मेरा मिड आएगा उसको मैं रूट बना देता हूँ, तो ये मेरा एज अ सब प्रॉब्लम ट्रीट कर सकता हूँ मैं इसको, कि ये अब एक अलग लिंक लिस्ट दी हुई है मेरे को, और ये लिंक लिस्ट 2 बना देता हूँ, इसको LL1 बना देता हूँ। ओके, सो LL1 का जो भी मिड आएगा वो रूट बन जाएगा, LL2 का जो मिड आएगा वो अब रूट बन जाएगा। तो इसको एज अ सब प्रॉब्लम अगर मैं ट्रीट करूँ तो -1 to 4 ले लेता हूँ, 1 to 4, तो जो भी मिड है उसको मैं रूट बना दूंगा, तो यहाँ पे 2 बना दिया। 2 के लेफ्ट में क्या आ सकता है, इसके लेफ्ट वाले, दैट इज -1, ठीक है, और राइट में क्या आ सकता है, 4। अब 8 और 10 को देखते हैं, LL2, okay, which was 8 and 10. In even case, what we observed here, the second mid is my root value, तो second mid आएगा इसका 10, तो यहाँ पे आ जाएगा simply 10। ओके, लेफ्ट में आएंगे जो भी बचे हुए एलिमेंट्स है लेफ्ट साइड में लिंक लिस्ट में, और राइट में जो भी एलिमेंट्स बचे हुए 10 के राइट साइड में। ओके, सो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे
2 के लेफ्ट साइड में बचा हुआ एक ही एलिमेंट, अगर लिंक लिस्ट में एक ही एलिमेंट बचा हुआ है तो मैं रिटर्न कर दूंगा सीधा वही एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पे भी एक ही एलिमेंट बचा हुआ है तो यहाँ पे मैं 4 रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पे भी एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो जहाँ अगर लिंक लिस्ट खाली है तो मैं सीधा रिटर्न कर दूंगा नल। सो लेट मी ट्राई टू ऑब्जर्व दिस विद माई फाइनल आंसर। क्या यही बना हुआ है? 6 2 10 -1 4 -1 4 हेयर। ओके, यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी। ओके, you can try it yourself like putting this question into your lead code. Okay, so यहाँ पे आएगा 8. Okay, let me give a try to the above example as well. Above example क्या था? -10 -3 0 5 9 -10 -3 0 5 9. ओके, मिड निकाला, मिड को बनाया रूट, LL1 और LL2 में डिवाइड कर दिया, -10 -3. These are simply my observations कि how I can approach this question. Okay, I simply written, I created two linked list 5 and 9. लेफ्ट में LL1 आएगा और राइट में LL2 आएगा। इवन के केस में सेकंड मिड मेरा रूट बनता है तो -3 आ जाएगा। LL2 के केस में भी ये भी इवन है तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स बचे हुए जो कि -10 है, राइट में तो कुछ बचा ही नहीं है। 3 के राइट में नल है, लेफ्ट में -10 था तो यहाँ पे -10 डाल दिया। 9 के केस में भी लेफ्ट में 5 डाल सकता हूँ, राइट में कुछ बचा ही नहीं है तो यहाँ पे नल आ जाएगा। Simple as that. Simple, very very simple. Okay, let me 0 -3 10, 0 -3 10, 0 -9 5, sorry 0 +9 and 5, exactly what we created. Okay, now the question came here is how to find out mid. Mid निकालने का simple वे बताता हूँ लिंक लिस्ट में. Okay, अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ माइनस, ओके लेट मी कॉपी दिस ओनली. Okay, so we know about fast and slow pointer. So if I need what I need 6 here, 6 as my mid. But if mid is 6, how I can find this linked list now? LL1 और LL2 में divide कैसे करूँगा linked list को? Okay, so अगर मुझे LL1 मिल गया, LL1 पे अगर मैं यहाँ पे आके रुक जाता हूँ तो मुझे पता है कि इसको मैं मिड बना सकता हूँ. कैसे मिड बना सकता हूँ? जो भी मिड वैल्यू आएगी, मिड डॉट नेक्स्ट को मैं मिड कंसीडर कर सकता हूँ क्योंकि 6 मेरे को what I try to say here, I need this element as my mid, but after finding mid I need to divide the linked list into two parts, LL1 and LL2 for left subtree and right subtree. This is my right subtree, this is my left subtree. Now as this is a single linked list I cannot go back, so I need to stop here. I can do this node dot next is my mid and this dot next is my LL2. This I observed कि if I want to find mid and I want to break it into LL1 and LL2, I cannot stop here because I cannot go back. So I need to stop here and after that I can find out my mid. Okay. Okay. So these are my observations. So if I now I try to use fast and slow pointer to calculate the mid. So fast here, slow here. Okay. Fast will go two steps ahead. So fast came here, slow came here. Fast came here, slow came here. Now fast is pointing to null. Slow came here, slow is pointing to 6. Do I want this 6 as my slow pointer to return as mid? No, I want 4. So to overcome this problem, I can maintain a previous pointer. Previous will store the previous value of slow. First it will store null, then this slow pointer value, then this reference, and then this reference. When slow gets stopped, previous value stored the previous value of slow. So I can return simply previous in this case. So in this case, now I am able to know how to find mid. Okay, I know how to find mid, then I know how to divide LL1 and LL2
simply, and then I will generate the binary search tree recursively. That's it. That is what I need to do. Let me show you a code once so you get an idea. If you do not want to see the code, you can stop the video here and try to write out the code by yourself. If you get stuck, continue the video. Okay, let me give you a walkthrough of the code. So this is my given definition of the, like, this function I need to return from this function only, sorted list to BST. सिंपल बेस केस, अगर हेड ही नल है तो रिटर्न क्या करूँगा, नल ही रिटर्न करूँगा. I created a function generate BST. Here I simply return a base case. If head dot next is equal to null, then I need to, if my linked list contains only single element. So this, sorry, let me create in this manner. This is my linked list, that's it. The next is null. So if it contains a single element, I will return this only one. So if head dot next is equal to null, so return new tree node where I put it the head dot value. That's it. Okay. I found out the mid using get mid function. Let me give you a walkthrough first of get mid function. So what does get mid is doing? If head is null, this is my base case. Simply return null. I created fast pointer, I created slow pointer, I created a previous. What does previous do? Previous will store the previous reference of slow. So when fast is not equal to null and fast was not equal to null, I will jump my fast 2 pointers, 2 steps ahead, slow 1 step ahead, and previous will store the previous reference of slow. I will return previous here. That's it. My get mid function is done. Now I came again. Okay. So root, what I told you in case of 1, 2, and 3, this is, if this is my linked list, 1, 2, 3, pre get mid will return this. Okay. Now I need this as my mid because mid is equal to root as we observed. So what I did, I created a tree node, root, new tree node, where mid dot next dot value is my root. This is my mid as per get mid function. As per get mid function, this came as my mid, but I want this as my root value, so mid dot next. Okay, I created root. Now list node right and list node left I need to create. LL1 and LL2, what we observed above, we need to create that LL1 and LL2. LL1 is nothing from head to previous. Okay, if my linked list is nothing, 1, 2, 3, 4, and 5. In this case, previous will come at this from get mid function. This is my mid from previous dot next. Okay. Now this is my head of the linked list. So LL1 become head to pre. Okay. So how I can do this? So to create LL1 and LL2, how I can create LL2? I need to break connection with previous one. So LL2 is nothing. Previous dot next dot next. A list node right is equal to mid dot next dot next. Now this will become my LL2. Now how I can create a LL1? I need to break connection till here. So previous dot next I can create null. So mid dot next. Consider this mid as I am saying previous because here I written the previous. So previous dot next is equal to null. Okay. Then I am doing a recursive call here and here. Root dot left is equal to generate BST where I sending LL1 and here I am sending LL2. That's it. At end I will return the root here. Thank you very much for watching this video. If this video helped you, please like and subscribe. Okay. Thank you very much.